Hello, my dear students. How you all are today? Hope for the best. You all are fine. So, yesterday we did verbs for grade 1 and 2. Today I am going to do a lesson about verbs for grade 3. So, let's start our lesson verbs. Grade 3 students, verbs क्या होता है? Verb doing some action or doing something. A verb is a word that shows the action or condition of a person, place, or thing. That is called verb. Mainly, there are three types of verbs. There are three main types of verbs: helping, action, and linking. Yesterday I told to grade 1 and 2 also about these three, but they did only the action because they are in small grade. But for grade 3 you have to do helping and linking verbs also with this lesson. So let us first recall the verb, what the verb means. Verb doing an action. Who all are doing? People, animal, or thing. So all are the verbs doing by person or a animal or a thing. It's moving, running. All these are verbs. So here an action verb tells what the subject does, did or will do. So three tenses are there. Focus on this one. Students, the three tenses are there: does, did or will do. The action could be something you cannot see. Action verbs are also called main verbs. Here in example you can see our class hopes for the best this year. Hopes. So this ये action कैसा है? Hopes वो आपको दिखेगा नहीं. You are not able to see it, but you are feel it. Hopes. उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस साल सबसे ज़्यादा अच्छी होगी हमारी क्लास. So here you can only feel it. You cannot see it. So some of this type of action verbs are also there. The children play outside after school. तो बच्चे बाहर खेलेंगे स्कूल आवर्स के बाद. So some actions you can feel. All this you did in your previous class. Only I am recalling all these things. So identify the action verb in each sentence. The crowd cheered at the football game. So here, where is the action verb? Cheer. I thanked mom for taking me to the mall. So here thanked or taking, which will come? Give me the answer in my comment. Amanda studied for her math test. What she did, Amanda? What the action she took? Studied. We gave Mike a surprise birthday party. What we did? We gave Mike a surprise party. So here action gave. My cousin received an award for his science project. Here action received. So all these things you did in your grade 1 and 2 about the action verb. So here in grade 3 you have to read about linking verbs and helping verbs. Here the linking verbs you can see on your screen. A linking verb connects the subject of a sentence to a noun that renames the subject or an adjective that describe it. Linking word, by the word itself you can understand. लिंकिंग, लिंक वो जोड़ता है, लिंक करता है, एक दूसरे को जोड़ता है, वो सेंटेंस को जोड़ता है. तो वर्ड कौन से हैं? एग्जाम्पल इज, आर, वर, वॉज, बिकम, अपीयर, एम, लुक, सीम, फील, ग्रो, टेस्ट. So all this word shows they link the sentence. Dogs are popular pets. So they connect the sentence, the dogs and the pets with the word are. अब हम यहाँ पे ये प्रैक्टिस करेंगे कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कहाँ है, कहाँ पे वो सेंटेंस को जोड़ रहा है. तो एक तरह से लिंकिंग वर्ब्स टू बी है. टू बी में क्या आएगा? इज, आर, वॉज, वर. सो उसमें से कुछ वर्ड्स वी आर यूजिंग फॉर सिंगुलर
and for plural we are using are. So in first sentence you can see an avocado is a fruit. एक सिंगल है, सिंगुलर, तो इससे हमने सेंटेंस को जोड़ दिया. एन एवोकाडो इज अ फ्रूट, एक सिंगल फ्रूट है. द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्यूटिफुल. फ्लावर्स मोर देन वन, तो हमने क्या लिंकिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया? लिंकिंग वर्ब आर, क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है. द डांस परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग. वॉज अब हमारा देखो यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, टेंस पास्ट में चला गया. वॉज अमेजिंग, डांस परफॉर्मेंस अच्छी थी, अमेजिंग थी, तो ये हमारे टेंस चेंज हो गया. तो वर्ब्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. वर्ब्स टू बी, टेंसेस भी आते हैं वर्ब्स में, एक्शन वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं. सो ऑल दिस यू हैव टू डू. जैक इज वेरी हैंडसम. जैक इज अ सिंगल boy, so we used here is linking verb. So is, was, are, all these are linking verbs which connect the sentence with the subject and predicate. Helping verbs क्या है? What do you mean by helping verbs? You did action verb in your grade 1 and 2. Then in grade 3 you did your linking verb just now, and now helping verbs. हेल्पिंग वर्ब्स में टेंसेस आएंगे अगेन. हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प और वर्क विद द मेन वर्ब टू क्रिएट अ वर्ब फ्रेज. हेल्पिंग वर्ब मे ऑल्सो बी कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. हैड, हैज, बीन, विल, मे, कैन, बी, इज, कुड, हैव, एम, वॉज, माइट, मस्ट, आर, do. All these are helping verbs which comes to tell us about the tense. She will be leaving for New York soon. Will be, so किसमें जाता है सेंटेंस? फ्यूचर टेंस में. तो here it shows that the helping verbs are also used for tenses. Will be, has been, had been, can be, could be, would be, might be, all these are helping verbs. So थोड़ी सी हम ये क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं. आइडेंटिफाई द हेल्पिंग एंड मेन वर्ब्स. द बैंड डायरेक्टर इज प्लानिंग द फॉल म्यूजिकल. यहाँ पे क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब? किसको कनेक्ट कर रहा है? इज प्लानिंग. ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में चल रहा है, इज प्लानिंग. They have lived next door for 10 years. वो लोग have lived, ये चला गया past tense, जो हो चुका. I might go to Six Flags tomorrow. Might go, ये हमारा helping verb है. कहाँ? देखिए go हो गया हमारा verb, और might क्या है? ये इसको helping verbs है, जो ये बता रहा है कि ये future में होगा. Their coach is teaching them a new प्ले. यहाँ पे टीचिंग हमारा वर्ब है, और इसको किससे हेल्प कर रहा है? इज. ये हमारा प्रेजेंट में है. देयर कोच इज टीचिंग देम अ न्यू प्ले. डियर स्टूडेंट्स, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. माई चैनल नेम इज V4 Concept Learning. In next video we will do about the tenses for grade 3. So thank you for watching my channel. Thanks a lot. So I need from you, please like, share and subscribe my channel. See you soon for next video. Have a nice day. Bye bye.